Well, students, we were discussing about characteristics of teaching model. शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं. 1. Encourage art of teaching. शिक्षण कला को प्रोत्साहित करना. Teaching is considered as an art. Teaching models encourage this art by providing learning environment. But we know that teaching is not only an art, but it is also a science because it is always organized. But it is an art how to present the subject matter before the learner. So one of the characteristics of teaching model is to encourage art of teaching. शिक्षण कला को प्रोत्साहित करना. Second, development of inherent activities. We know that we all have talent by birth, and our duty, the duty of the teacher, to bring out the inherent talent of an individual. तो टीचिंग मॉडल का काम, शिक्षण प्रतिमान का भी यही काम है कि हमारे अंदर जो इनहेरेंट एबिलिटीज है, हमारे अंदर जो जन्मजात गुण हैं, उनका विकास करना, जन्मजात गुणों का विकास करना. टीचिंग मॉडल्स bring about the qualitative development of personality as it helps in developing human ability. It also increases the teacher's social competence. Third, based on individual differences. ये व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है. You know that in first paper we have learned individual differences, व्यक्तिगत भिन्नता. In the world, not every human being are the same in their personality, in their traits, in their taste and other activities. Different person has different abilities, different taste, different personality, different behavior, different likes, dislikes, do's, don'ts. तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, क्या कह रहा हूं, कहते आया हूं कि व्यक्तिगत भिन्नता, हमारी कुछ लाइक्स डिसलाइक्स दूसरे के साथ मिल भी सकती हैं, नहीं भी सकती हैं, लेकिन हमने दूसरे के गुणों को भी उतना ही सम्मान देना है जितना कि हम अपने आप को देते हैं. कभी कभी क्या होता है, किसी की बात हमारी समझ में नहीं आती, किसी का व्यवहार हमारे उसमें आता, हम उससे घृणा शुरू कर देते हैं. We start to hate. No, never. That's his or her quality and it's my quality. How can both be the same? It can never. Therefore, always respect the opinion, ideas of others. Respect individual difference. तो यहाँ पर जो टीचिंग मॉडल का भी यही काम है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर. टीचिंग मॉडल्स uses the student's interest as it is constructed on the basis of individual differences. Fourth is influenced by philosophy. दर्शन शास्त्र द्वारा प्रेरित, influence. Every human, they have, each and every human have his or her philosophy. सबका दर्शन अलग अलग हो सकता, सेम नहीं हो सकता. Different heads have different tails. It is a proverb. कोई भी दो मनुष्य सेम नहीं हो सकते, तो उनकी फिलॉसफी कैसे सेम होगी. तो इसीलिए जो यहाँ पर जो आपका टीचिंग मॉडल, ये इन्फ्लुएंस रहते हैं फिलॉसफी के द्वारा. Every teaching model is influenced by the philosophy of education. Hence, teachers formulate different models of teaching under the influence of philosophy they believe. जो उनकी अपनी फिलॉसफी है. और फिलॉसफी के बारे में आपने बड़े देखोगे, भारतीय दर्शन, इंडियन, ठीक है, भारतीय दर्शन और वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य दर्शन. उसके बाद आपने देखा होगा उसमें क्या क्या, बहुत सारे जो फर्स्ट पेपर में आपने पढ़े होंगे, जो है क्या, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है, तो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ठीक, और अस्तित्ववाद, ये सारे के सारे. तो कहीं पर डिफरेंस हो सकता, कहीं पर मिक्स भी हो सकता है, बट द टीचिंग मॉडल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलॉसफी. आंसर फंडामेंटल क्वेश्चन, जैसे हम बेसिक कंसेप्ट लर्निंग मॉडल है, जो कंसेप्ट लर्निंग मॉडल, हम कंसेप्ट छोटी छोटी चीजों का आंसर बड़े आसान से दे सकते हैं, उनको सीख सकते हैं.
In every teaching model, answers to all the fundamental questions pertaining to the behavior of students and teachers are included. 6 है providing appropriate experience. उचित अनुभव को प्रदान करना. Teaching models provide proper experiences to both teacher and students because both are active. Whereas you know that I'm active because I'm giving the lecture, and you are passive because you are only listening. But when we use teaching models, both students and teacher are active. Both participate in teaching learning process. So it provides appropriate experience. Selecting the content and presenting it for learning before the student is the main essentiality of teaching. This difficulty is solved when a teacher presents appropriate experience before the students. जब टीचर पढ़ाता तो पढ़ाते 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 उसको बहुत अनुभव हो जाता है और वो अपने अनुभव के आधार पर उस कंटेंट मैटर को प्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू द बेसिस, टेकिंग द बेसिस ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग. मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के लिए कौन सी मैगजीम, कौन सी नीति लगानी है, कौन सा हमने युक्ति लगानी है, ये यहाँ पर देता है. और उसके बाद है प्रैक्टिस एंड कंसंट्रेशन. The development of teaching model is based on regular and continuous practice and concentration. This proper development of teaching model is only possible when the assumptions are made clear by relating thinking. In this way, these are the 8 headings. There may be more of it, okay, but these are 8 headings. But if you go for the sentence, then models of teaching are some sort of pattern or plans prepared in advance for success of the teaching learning process. Teaching learning process, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्रतिमान को तैयार किया जाता है. The differ from general teaching, that means there is the difference between general teaching and also the teaching by the models, using models. General teaching technique and strategy, in the sense they are designed to meet specific objective or goals. Because before presenting a lecture, we have to make some of the objectives based on Bloom's taxonomy. लेकिन टीचिंग मॉडल के आधार पर हम ये देखते हैं कि हमें उन उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई. It provides specific guidelines or the blueprint in advance for the realization of specific objectives by specifying the teaching activities and controlling teaching learning environment. Teaching model gives a specific instructional design for particular type of instruction in specified teaching learning situation. It helps in creating a proper teaching learning environment. Teaching models help in specifying the criteria of acceptable performance expected from the learner in a specific teaching learning situation. 7 point, teaching models provide systematic procedures and organized effort for the desirable modification of behavior of the learner. 8 point, they first specify the teaching or learning outcomes in behavioral terms, and they lay down a step-by-step procedure for the attainment of these outcomes. Help the teacher in the task in the same way as an engineer is helped in the construction of a building or bridge by an appropriate model of blueprint prepared in advance. जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने वाला जो पहले अपना मॉडल बनाता है उस हिसाब से बनाता है, सेम वे टीचर भी जो क्लास में प्रेजेंट करता है उसके लिए मॉडल तैयार करता है. इसलिए क्या टीचिंग मॉडल सेव द एनर्जी, time and effort of the teacher and learner, besides providing economy to the best utilization of the other teaching learning process. Model of teaching are known to serve 3 major functions in a given teaching learning situation. 3 major functions हैं जो कि ये learning situation में प्रदान करते हैं. Then these are some of the characteristics of teaching models. तो ये विशेषताएं हिंदी में हम देख लेंगे.
एक बार हिंदी में, हालांकि आई ट्रांसलेटेड इंग्लिश इनटू हिंदी, स्टिल यू कैन गो फॉर हिंदी। शिक्षण प्रतिमान का कुछ आधार होता है, ठीक है। उस आधार के लिए वातावरण तैयार करना, शिक्षण विद्यार्थियों की भी अंतक्रिया का होना और शिक्षण को सरल बनाना। दूसरा था आपका उपयुक्त अनुभव प्रदान करना। तीसरा था मौलिक प्रश्नों का उत्तर। चौथा था वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित। अगला था विद्यार्थियों की रुचि का उपयोग। और उसके बाद है दर्शन से प्रभावित, ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय फिलॉसफी। सातवां था आपका शिक्षण सूत्र, टीचिंग मैगजीन। अगला था अभ्यास तथा साधना। उसके बाद था मानव योग्यता का विकास। उसके बाद शिक्षण एक कला के रूप में, ये सबसे पहले हमने बताया था। शिक्षण के व्यक्तित्व की गुणात्मक उन्नति। तो इन दिस वे ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखे कि टीचिंग मॉडल्स उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इफ वी गो फॉर यूटिलिटी ऑफ टीचिंग मॉडल, तो वही कैरेक्टरिस्टिक को हम यहाँ पर ले सकते हैं कि इनका क्या क्या उपयोगिता है टीचिंग मॉडल की। ये तो हमें पता चल गया कि टीचिंग मॉडल हमारे कंटेंट मैटर को प्रेजेंट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक और बहुत ही इफेक्टिव वे है। तो इसलिए टीचिंग मॉडल्स आर यूजफुल इन डेवलपिंग सोशल एफिशिएंसी, पर्सनल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स। Teaching models helps to establish teaching and learning relationship empirically. Teaching models helps in providing theoretical rationale to the teaching, which will provide changes in rectification in teaching. Teaching models stimulate of the development of new educational innovations in teaching strategies and tactics, which may replace the existing ones in the school of today. Teaching models assist makers of material to create more interesting and effective instructional material and learning sources. Teaching models assist teachers to develop their capacity to create conducive, conductive, यहाँ पर conductive या conducive environment for teaching as its nature is practical. Conductive environment, yes. Teaching models help curriculum planner to plan learning activities and content material which provide a variety of educational experiences to learners. Teaching model evaluate the behavior of students for this important task. It presents such as the criterion with the help of which the changes the student behavior can be easily evaluated. Then these are the utilities of teaching model. यदि हम हिंदी में बात करें तो शिक्षण प्रतिमान की क्या क्या उपयोगिताएं हैं, तो इनको आप एक एक करके देख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति है, शिक्षण को व्यवहारिक रूप देना है, ठीक है, और शिक्षण के क्षेत्र में विशिष्टीकरण का है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक के शिक्षण को प्रभावोत्पादक बनाने में, इफेक्टिव बनाने में मदद करता है और यह पढ़ाने के लिए उपयुक्त कंडीशंस एनवायरनमेंट प्राप्त देता है और सही नीतियों को सही युक्तियों का प्रयोग के लिए बताता है और साथ में शिक्षण में क्या क्या सुधार लाना है यह भी पता किया जा सकता है और शिक्षण प्रतिमान विद्यार्थियों के व्यवहार का मूल्यांकन करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये टीचिंग मॉडल्स क्या क्या थे और इनके कौन कौन से हमने जो है देखे कि टीचिंग मॉडल की क्या क्या विशेषताएं थी और क्या